Good morning and welcome back, students of class 10. So today we are going to continue with our chapter in reproduction. Yesterday we had discussed how variations are important and why variations are very important for our species to propagate. Today we are going to first start to learn about what are the different types of reproduction that is present in the living world. Overall, the different reproduction types can be grouped into two groups. दो तरह का reproduction हो सकता है, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is seen mostly in lower life form with more simple structures, while sexual reproduction is observed in organisms having more complex body structures. Why is that? We will learn later. So today we are going to look at asexual reproduction and we are going to learn about three different types of asexual reproduction. First is, what is asexual reproduction? Asexual reproduction होता क्या है? In asexual reproduction, one organism gives rise to a copy of the second organism from its own chromosomes only. वो सिर्फ अपने क्रोमोसोम का ही एक कॉपी करके दूसरा अपने ही जैसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है. देखिएगा, इन योर बुक द डेफिनेशन इज गिवन एज asexual reproduction is the absence of sex cells or gametes. When reproduction happens without the production of gametes, that is called asexual reproduction. इस डेफिनेशन को मैं उतना अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि आप किसी चीज को डिफाइन उसमें क्या नहीं होता है वो देख के नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अमन का दाढ़ी नहीं आता है इसीलिए वो अमन है, ऐसा नहीं कह सकता. दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अमन. आई कैन से दैट जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंदर बाइक चलाता है वो अमन है, राइट? वी नीड टू बी identify or define things based on positive characters is my point. कि positive character के बेस के ऊपर हम लोग points लिख सकते हैं. So the asexual reproduction का अगर definition आए तो आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए. Asexual reproduction is a type of reproduction where copy of an organism is made from its own chromosome and no gametes are produced. Asexual reproduction is a type of reproduction in which copies of an organism are produced from its own chromosome and no gametes are produced. Okay? So now that we have understand the definition of asexual reproduction, we will now look at three different types of asexual reproduction today. There are more types which we will discuss in the future. First is called asexual reproduction that we look at is we get in amoeba, euglena, and this process is called fission. Fission, the process of asexual reproduction, is very simple. In the fission mode of asexual reproduction, a cell body and its nucleus just simply divides in half and it gets two cells are produced. एक सेल था, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, फिर न्यूक्लियस भी 2 हो गया और सेल भी 2 हो गया. This is called the fission procedure. This is more seen in simple celled organisms like amoeba, euglena, paramecium. Here you can leishmania also. इनमें ये चीज दिखता है कि जहां पे जस्ट क्रोमोसोम पहले द क्रोमोसोम नंबर डबल्स लाइक द सेल डिविजन यू हैव नोटेड एट इन म्यूसिस, राइट? म्यूसिस के बारे में हम लोग पढ़े थे. बाय म्यूसिस द क्रोमोसोम नंबर गेट्स डबल्ड, देन द one nucleus breaks down into 2 nucleus, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म also breaks down into 2 cytoplasms having each one nucleus each. So one cell becomes 2 cell. तो ऐसे करके एक सेल 2 सेल में टूट जाता है.
This is the very basic type of asexual reproduction. The next type of asexual reproduction that we have is through sporulation or by spore formation. In this type of asexual reproduction, what happens is that the meiosis happens many times, and or actually meiosis happen one time, that means one उसके डबल हो गया, फिर हाफ हो गया, डबल उसका नंबर जो है, उसके बाद आफ्टर दैट the nucleus divides many times to produce many small nucleus within a cell. एक सेल के अंदर न्यूक्लियस और भी बहुत नंबर में बढ़ जाते हैं. दे डिवाइड इनसाइड एंड न्यूक्लियस का नंबर बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं. एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम ईच न्यूक्लियस थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके बहुत सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. These small particles having one nucleus and little bit of cytoplasm is called a cyst. इसको कहा जाता है cyst. तो एक cyst में क्या होता है? One nucleus and little bit of cytoplasm. तो समझ लीजिए कि एक बड़ा सा सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस टूट के 10 छोटा छोटा न्यूक्लियस बन गया. अब हर 10 छोटा छोटा न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके अपना अपना सेल बना के अलग हो गया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ सिस्ट. नॉर्मली व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन और इज इन अ नॉन फेवरेबल कंडीशन, जब कोई ऑर्गेनिज्म एक नॉन फेवरेबल कंडीशन में होता है तो ये सिस्ट बना के रिप्रोड्यूस करता है. इट रिप्रोड्यूसेस बाय प्रोड्यूसिंग सिस्ट. इसके वजह से क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है या वो जो सेल था दैट डाइज, बट द सिस्ट्स एग्जिस्ट. वो सिस्ट रह जाता है इन अ डोरमेंट स्टेट. वो एक सीड की तरह रह जाता है. एंड देन अगेन व्हेन द कंडीशन बिकम्स फेवरेबल, उसके बाद जब कंडीशन फिर से फेवरेबल होता है, देन द सिस्ट ग्रोज and its cytoplasm grows to become a fully formed cell. Okay, another type of asexual reproduction that we see is budding. Budding is seen in multicellular organisms जिसमें एक से ज्यादा सेल है, multicellular organism, they produce by budding. In budding what happens? A small part, a small outgrowth comes out from the main body. जो उन लोगों का मल्टीसेलुलर मेन बॉडी है, वहां से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकल आता है. एंड ग्रेजुअली दैट आउटग्रोथ इंक्रीजेस इन साइज. वो आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होता है एंड इवेंचुअली दैट आउटग्रोथ गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी. वो जो आउटग्रोथ निकला था वो मेन बॉडी से सेपरेट होके अलग हो जाता है. एंड ओवर टाइम दैट बिकम्स अ फुल्ली फॉर्म्ड इंडिविजुअल. और ओवर द टाइम वो धीरे धीरे बड़ा होके एक फुल्ली फॉर्म्ड इंडिविजुअल हो जाता है. तो दिस बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन ईस्ट, इट इज ऑब्जर्व्ड इन स्पंज. ओके, ये ईस्ट में आप सब देखते हो, स्पंज में आप लोग देख सकते हो. ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंजाई, राइट? सो दिस यू कैन सी इन ईस्ट और फन और इन स्पंजेस. स्पंज के बारे में आप लोग पढ़े थे, पॉरीफेरा, राइट, इन क्लास 9. So that is seen by budding. Through budding this happens. So these are the 3 basic forms of asexual reproduction. After that we have fragmentation and other modes also that we are going to read about in next day's class. Read these sections carefully, and if you have any questions, feel free to ask.